ओके, सो ये सब रोज है, ये सब कॉलम्स है, एंड दिस इज कॉल्ड, नीचे यू कैन सी दिस डाउन, इट्स अ शीट 1, जस्ट एक ही पेपर है, और इसको फाइल को बुक कहते हैं। बुक मतलब हमारे पास में कैसे बुक होती है, स्क्वायर लाइन बुक, इसको हम लोग कहते हैं वर्कबुक। तो दिस इज माय बुक, और इस बुक का नाम है बुक 1, बुक 2, जो भी नाम होगा फाइल का नाम आपको दिखाई देगा ऊपर। ओके, हियर इट्स बुक 1 रिटन हियर, यू कैन सी दिस। ओके, नाउ ए बी सी डी ये सब क्या है, कॉलम्स है, राइट। एक पेज पे आई हैव हाउ मेनी कॉलम्स, ए बी सी डी, कितना होगा मुझे? सर आई गेस 26, A to Z। 26 करेक्ट, मतलब Z तक होगा। हाँ सर। देखते हैं, Z के बाद भी हमारे पास में है ए बी ए सी ए डी ए, it will go to AZ, then I have BA, BB, BC, BD, B, it goes to BZ, then I go to CA, CB। सर ये कब तक सिलसिला चलते रहेगा? सिलसिला ये चाहत का बुझने न दिया कभी, वाह, ये सिलसिला चलेगा XFD तक। XFD is the last column of Excel। 16,800, हाँ 300 एंड किसको था, 16,300 है। So one sheet has XFD number of columns। तो मैं आया सबको, तो आप सोच लो कि Excel can handle so many columns at the same time। Okay, now let's talk about, ये तो एक ही पेज है आपके पास। Now let's talk how many rows we have। क्या बोलते हो गणेश, कितने आदमी थे, सॉरी कितने रोज है? अप्रॉक्स 10,000। 10,000 हो सकते हैं, आई डोंट नो, 10,000 हो सकते हैं, 1,000 भी हो सकता है। मगर अगर मैं आपसे कहूँ ना, तो यहाँ पे टोटल 10,48,576 rows। One page has 10 lakhs rows and 16,000 columns. See the capacity of one page. And after you finish this one page, I have one more sheet can be added here, and I get one more page having the same number of columns and same number of rows. मतलब ये एक ही book रहेगा, another page. So your one file can handle huge database। ठीक है ना, तो एक्सेल को कम नहीं समझने, ठीक है। एक्सेल इज आल्सो अ वेरी बिग डेटाबेस, कैन हैंडल अ डेटाबेस नाउ। ओके, सो ठीक है, इतना तो आपको पता चल गया। नाउ व्हाट आर दीस स्क्वायर सेल्स। सो एवरी सेल, हर एक जो सेल होता है ना प्रकाश जी, वो सेल का नाम होता है, राइट। जैसे आपका नाम प्रकाश है, निपुण है, गणेश है, एवरी सेल हैज अ नेम। अ सेल इज अ चाइल्ड, एक बच्चा है जिसके माँ बाप होते हैं। ये जो सेल है ना, इसके माँ बाप कौन है? के, जैसे ये बंदा है, इसका नाम है के व्हाट 11। के, सॉरी K11 ऐसे। दिस फेलो इज K11, ठीक है ना, समझ में आया ना गणेश? मानसा एंजॉयिंग? सर ये समझ में नहीं आया, फिर से बताइए। अरे तो फिर कौन बोलेगा? देखो मैं कैसे पहचान गया, मानसा को समझ में नहीं है, बोलने का ना मानसा। ओके, ये बच्चे हैं ना, ये सब दीज आर ऑल किड्स। ये क्या है, एल के, ये सब क्या है बोलो? व्हाट आर दीज कॉल्ड? कॉलम्स। ऐसे करो, ऐसे करने का मेरे को मतलब समझ में आया। ये कॉलम्स हो गया, वेरी नाइस मानसा। ये 1 2 3 4 क्या है? रोज है, करेक्ट, वेरी गुड। तो ये जो बीच में ये जो चौकड़ी है ना, स्क्वायर, ये लोग कौन है? दे आर कॉल्ड सेल्स। सेल बोलते हैं इसको, बच्चे हैं। एक सेल हैज अ पेरेंट्स, जैसे ये नंबर है I9, ये कौन है? ये M10, दिख रहा है आपको? ओके, नाउ टेल मी वन थिंग, ये कौन है? N25। मानसा बोलेगी, मानसा
मानसा आज बोलोगी कि कल बोलोगी? नहीं सर, वो मेरा स्क्रीन छोटा है ना, तो मुझे थोड़ा दिखाई Oh, नहीं दे रहा। you are on मोबाइल और लैपटॉप? मोबाइल लैपटॉप नहीं है आपके पास? है, पर उसमें जूम ऐप नहीं है। ओके कल हाँ, तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा मंडे को है, आपको पता है ना? हाँ, आपका नेक्स्ट लेक्चर कभी है? शायद ही कल होगा। नहीं, आप देख लो, जस्ट चेक योर schedules. You have Monday, Wednesday, Friday, ओके right? लेकिन अब आपका आज जो मैंने लेक्चर लिया, तो नेक्स्ट लेक्चर starts from Monday onwards, because I have the timetable which is giving me the date of next lecture Monday. आप लोग भी ओके देख लो अपना टाइम टेबल क्या है। आपका शायद वेडनेसडे होगा, मेरे को लगता है you have Wednesday batch, I don't know. So anyways, तो be on the laptop so that you'll enjoy when I ask you something. आप लोग कुछ सामने सामने कर भी सकते हो ना लैपटॉप पे। तो ये सब जो है ना, ये सब सेल्स है, सो यू कैन जस्ट सी दिस, एंड इफ यू कैन नॉट ये देखने का नहीं इधर मनसा, कोई भी सेल पे मैं जब क्लिक करूंगा ना, तो इधर देखने का, यू कैन जस्ट सी दिस लेफ्ट साइड, इट शोज यू द नेम बॉक्स, दिस इज राइट नाउ H10, दिस इज D9, एवरी सेल हैज इट्स ओन यूनिक नेम, कोई भी एक दूसरे से मिलता नहीं रहेगा। ओके, नाउ आई एम राइट नाउ इन, अभी मैं कहां पर हूं नवीन? ऐसे किसको भी मैं बोलूंगा कभी भी बीच में, अनम्यूट करके आंसर करने का। नवीन, आई एम ऑन विच सेल राइट नाउ? नवीन A1 सर। हाँ, आई, अभी मैं कौन से सेल पे हूँ? A1 A1, राइट? A1 जो होता है इसको घर बोलते हैं, इट इज कॉल्ड होम ऑफ द सेल। आई जस्ट वांट टू गो टू द लास्ट कॉलम, आई वांट टू गो टू द लास्ट कॉलम, तो व्हाट आई डू, कंट्रोल के साथ एरो की, राइट एरो की, कंट्रोल के साथ में जब आप राइट एरो की दबाओगे तो इट विल टेक यू टू द लास्ट सेल, लास्ट, लेकिन कहां जाएगा वो? लास्ट वर्किंग सेल फ्रॉम द रो। ठीक है, मतलब उसी रो के लास्ट वर्किंग सेल में जाएगा। ठीक है, याद रखना, उसी रो के। Say for example, okay, you want to write it down, you can write down. Control plus right arrow key will take you to the last working cell of the same row. Okay, it means, suppose अभी मैं यहाँ पे हूँ, I am on the 4th row, and you press control and right arrow key, you will be on the 4th row, but you will be taken to the last working cell. और working cell कौन सा, मतलब जो लास्ट वर्क किया हुआ था। अब यहाँ पे तो कुछ किया ही नहीं है, तो it will take you to the XFD column, जो लास्ट है, उसको कुछ मिला नहीं बीच में, इसके लिए वो। बट अगर सपोज इफ देर इज समथिंग, अगर सपोज मान लो कि यहाँ पे लिखा है एप्पल, ठीक है, एंड नाउ इफ यू प्रेस कंट्रोल एंड राइट एरो की, द फर्स्ट स्टॉप विल बी ऑन एप्पल, बिकॉज दिस इज द लास्ट वर्किंग सेल ऑफ द सेम रो। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, इफ सपोज यू, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है मैंगो, नाउ इफ आई प्रेस कंट्रोल एंड राइट एरो की, मैं कहां जाऊंगा? मैंगो। Is mango the last working cell of the same row? Apple sir. But it will go to mango. It will not go to apple. You know why? Because see, your eyes may can see. break. आप humans हो, आप समझ गए कि this is the apple is the last working cell. But how Excel will know that that apple is the last working cell? उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि वो apple last working cell है कि mango है? You know why? It will travel from here. Okay. अब ये खाली वाला है, यहाँ पे suppose ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ, it will stop over here. It will stop over here. Even suppose if I write here something, say banana, right? And I am over here. And now if I press control and right arrow key, it will stop here. याद रखना, because mango के आगे दुनिया खाली है. He got a empty land here. So when Excel gets an empty land, तभी वो समझता है कि this is the last working cell. So when you are over here and you press control right arrow key, it will stop here. ठीक है ना? And now if I press control right arrow key, he will travel, and it will stop here because again he got the blank cell. See, यहाँ पे रुक गया. Okay, now suppose if you have something written over here,
And now you are here on banana. अब अगर मैं right arrow की दबाऊंगा, it will travel, it will travel, it will travel, it will travel. It will stop on apple because there is no empty land in between. अभी वो directly apple पे चला direct. Okay, but if you have any empty spaces in between and you press control right arrow की, तो अब वो कहाँ जाएगा? It will stop on A now. And then अभी मैं करूँगा तो किधर जाएगा बताओ? Now control right arrow की will take where? Apple. No. It will stop on J now. Okay. So, see, because after traveling on the empty land, the first cell what you got is this one. So it will always look for the first cell. है ना? तो अगर मैं यहाँ से भी control left arrow की करूँगा ना, it will stop on apple first, right? अभी मैं वापस से करूँगा, it will stop on J. Now if I do, it will stop on A and then banana. वो आप लोग कर लेना. You'll understand this. In the same way, you have things written like this. And suppose if you want to directly go to the last row where you have worked, so control or down arrow की दबा देना always. याद रखना, this is a very important shortcut key which is always used, right? Say for example, अभी मैं आपको बताऊं कि I have a sheet. Let's say I will open some sheet here. Okay. Now this is a sheet. Okay. I am on cell A1. अब मुझे one more record if I want to add, then what I will do? I will press control and down arrow key because I don't know how many rows are there. मुझे नहीं मालूम है कि नीचे कितना लिखा हुआ है. I press control and down arrow key. It will directly take me to the 60th row. Means this is the last one. इसके नीचे मैं आ जाऊंगा directly and I will start working now. Got this? Yes, sir. Okay. You press control and right arrow key now. You go to the last column. Okay. But what if you want to go to the last working cell of your sheet? Try to understand मैं क्या बोल रहा हूँ. अगर आप लोगों को last column में जाना है of the same row, तो control right arrow. If you want to go to the last row of the same column, press control and down arrow. But if you don't know the column and the row, तुमको जाना है directly. मुझे suppose example ले लो. This is my data. Okay. Now from this data, I want to go to the last working cell. मतलब I don't know कौन सा row है कि कौन सा column है. My last working cell is this one, right? Across. So I will press control and end key. Working cell not of the row nor of the column. आपके sheet का working cell में घुसेगा वो. For example, let me see that. मैं कहीं पर भी रहूं, wherever I am, if I press control end now, it will take me to H13. सीधा मुझे वो H13 पे लेके जाएगा. देखो. अच्छा यहाँ पे और भी किया था. I will come here and write. Yeah. So I press control and end. You can just see this. Control end. Fine. Yes, sir. If you write something over here, now if I press control end, where will I go? I will go to key 15, correct? Let's see. Control end. See, it took me to key 15, correct? If I write something more down, let me type it here. In M25, I type something. I type mango here. I am over here. I am in cell A1. अभी अगर मैंने control end दबाया तो मैं किधर जाऊंगा? मानसा. Yes, sir.
I hope you're not sleeping, right? No, sir. Good, good. So where will I go now? If I press Control End, आपने देखा नहीं, मतलब मानसा ने देखा नहीं. The Sir, last, M25. yeah, it was M25, right? Yes. Let me check. Yes, Mansa, you are correct. Mansa, it's M25. आप 1000 रुपए जीतती हैं. Okay. If I delete this mango तोड़ दिया मैंने. There's no mango now. Again, I come back to my home. Now, if I press Control End, क्या होगा Mansa? Ganesh, कोई भी बोल सकता है. Anyone? A15, sir. M25 again. Okay. K15. K15. 90% K15, दर्शकों sir. ने 90% लोगों ने K15 बोला है. तो देखते हैं जनता क्या बोलती है. आंसर क्या है? I press Control and End. ओह, जनता हमेशा सही नहीं होती है, ऐसे अमिताभ बच्चन बहुत बार बोलते हैं. तो निपुण ने करेक्ट आंसर दिया था, लेकिन कोई विश्वास नहीं किया उसके ऊपर. एंड समझ में आया आपको? Why it went to K25 M25? मानसा, दर्शन, क्यों गया उधर वो? Because last उस पे काम किया था. Because Control End means last working cell. वर्किंग सेल. यहाँ पे वर्क हुआ था ना कभी जिंदगी में, एक बार आप माउंट एवरेस्ट जाके आए थे, मतलब दिस इज द प्लेस यू हैड बीन वंस. इवन इफ यू कम डाउन, यहाँ पे अगर किधर भी आके मैं अगर स्पेस बार भी दबा दूंगा, कुछ भी करके इधर कुछ गड़बड़ करके आ गया मैं, आज के बाद इफ यू प्रेस कंट्रोल एंड, नाउ इट विल नॉट टेक यू टू M25, इट इज टेक यू टू N33, क्योंकि यहाँ पे कुछ करके आया तुम एक बार, है ना. दिस विल स्टे ओनली एंड ओनली टिल यू सेव द फाइल. याद रख. मतलब अगर मैं अभी इसको बंद करके वापस से चालू करूंगा ना, and then if I press Control End, then it will stop here only. It will not stop anywhere else, because this is only in the temporary memory, है ना. So next time when you open the file, okay, तो वो exactly अगर ये सब delete कर दूंगा मैं, if I delete this, if I save this file, and then if I press Control End, next time when I open it will stop here only. Understood? Because Yes, those sir. things will not be in the memory. Okay. Now suppose you are here and I have written a small password in my cell Z100. मैंने एक सेल है Z100, उसमें मैंने एक पासवर्ड लिखा हुआ है, and I directly want to reach there. तो या तो मैं ऐसे 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 करके Z100 तक पहुंचूंगा. I come to Z and then I come down and go to 100 like this. It will take a lot of time. आ भी गया, चलो 100 पे आ गया. This is Z100. So direct way है, you press F5 function. F5 दबाना. F5 से क्या होता है? F5 means go to cell. कोई भी सेल पे डायरेक्ट जंप मारना है तो जस्ट प्रेस F5. Once you press F5, it will ask you. See, it is asking me. जैसे मैंने F5 दबाया, मुझे बोलता है यस सर, बोलिए किधर पहुंचा हूं आपको. मैं बोलता हूँ यार मेरे को तू Z100 पे पहुंचाएगा क्या? प्रेस एंटर एंड इट विल टेक यू टू Z100. इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके. ये तो ठीक है. अभी पासवर्ड Z100 में लिखा था मैंने. I wrote some password in Z100 and what is my password? ठीक है. अभी सेल का एड्रेस याद नहीं है and I want to directly reach there. अगर सेल नंबर याद रहेगा तो I can press F5 और Z100 दे सकता हूँ ना, right? I don't remember the cell address now, and how do I reach to my password? निपुण. सर F5 में रेफरेंस जो है उसमें जो पासवर्ड आपने लिखा है वो लिख के. नहीं, नहीं.
वहां पे आप नहीं Okay. दे सकते, वहां पे सिर्फ आपको सेल नंबर देना है। अगर Okay, sir. आपको ये बात याद नहीं है तो कंट्रोल F कर दो, सिंपल है ना, Control F. Right, sir. कंट्रोल F करेंगे। सो आई दो तरीके से ढूंढ रहा हूं मैं, वन इज बाय गिविंग द सेल नंबर एंड वन इज बाय गिविंग द पासवर्ड का कुछ तो हिंट दो। इवन इफ यू प्रेस कंट्रोल F और मुझे पूछता है व्हाट यू वांट टू फाइंड, आई से कैन यू समथिंग फाइंड मी पास, समथिंग लाइक दैट, पूरा भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, एंड यू प्रेस एंटर, इट विल टेक यू टू द टेक्स्ट वेयर इट्स रिटन पासवर्ड, पूरे शीट के अंदर किधर। Sir, ठीक है sir, चेतन, हाय sir. चेतन, आई रियली अप्रिशिएट यू, यू आर सो ऑनेस्ट एक्चुअली। चेतन बिजी भी था, फोन पे भी था, मगर वो वीडियो पे बना रहा, इज सो ऑनेस्ट। बहुत लोग वीडियो बंद कर देते हैं, बट चेतन वाज ऑन फोन कॉल, बट ठीक है। आई होप यू आर लिसनिंग टू मी चेतन। Yes, sir. These are all basic things I know, ये सब आपको पता रहेगा, so I will never force you people। जिसको आता है वो मस्त आराम से सो जाए तो भी चलेगा, Sir, but everyone one doubt. so many of them are very fresher, so I have to start all these things। Sir, I have a doubt, sir. Yeah, who is this? Sir, Darshan. Yeah, Darshan, yeah। Sir, instead of F5, we could use Control plus N, no, sir, like for finding the password. Control plus end? Yeah, sir. No, Like no, the end key, end key. no, no, Like no, it is the last working. no, 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 no. How you know it is the last working cell? This is my worksheet, suppose this is my worksheet, right? And acha, you mean to say Yes. कि I have written something over here, right? Suppose if I write here password, Yeah, sir. what will happen now if you press control and end? You know where it will take you? In the sheet, the last working cell in the sheet, it goes to the last working. Yeah, across, मतलब वो अभी किधर जाएगा ना, मैं, it will take you to the same column where Yes, you sir. know it will take you, very nice Darshan, ये भी अच्छा चीज है, it will take you to the same column but it will take you on the 60th row। देखो control end, It takes me to the end, not because as per आपके 60 rows के हिसाब से वो बोलता है कि this is the last row, working row is 60th and the working column is AR, so उसके point पे लेके जाना है, right? AR is the last working column and 60th is the last working row, so it will take you to AR60, then you will keep finding where it is। but ठीक है, this is also nice कि you can directly use this also and then you know that this कहीं तो ये इसी column में, but where? So there are 10 lakhs rows, कहाँ ढूंढोगे आप इसमें पूरे में, है ना? So better Yes, sir. press Control F and type pass, and you press enter, it will take you directly where the things are। it's in AR4, fourth row में पड़ा हुआ है। Okay. Okay, so this was all about okay, now the basic things we learn। let's say you have date, salary, name, surname, ऐसे सब, we have so many fields, right? And I want to add one column that is called product ID, which should be after the surname and before the product column। I want to insert one column, so there are many ways। the best very popular method, सबसे ज्यादा popular add करने का एक ही है, अभी लिखते जाओ अपने बुक में। how do I add one column between, कभी कभी ना ये ऐसा लगता है कि एकदम सिंपल है, लेकिन ये सब डेली यूसेज है, एकदम डेली, ये हैंडी होना चाहिए एकदम। इंसर्टिंग कॉलम, इंसर्टिंग रोज, इंसर्टिंग शीट्स, इंसर्टिंग सेल्स, ये सब इतना हैंडी रहना चाहिए ना कि एवरी डे टू डे यूज में आता है ये सब चीज। तो इसके ऊपर बराबर हाथ साफ कर लो एंड ऑलवेज यूज द शॉर्टकट की, बेस्ट शॉर्टकट की। ओके, सो आई वांट टू ऐड दिस। तो एक तो तरीका यही है, एवरीवन नोज, निपुण आल्सो नोज दिस, कि आप कोई भी जगह पे आके राइट क्लिक करते हो, व्हेनेवर यू जस्ट राइट क्लिक एंड से that you want to insert something, whenever you right click it will ask you what you want to insert something, you say I want to insert something, when you say insert, Excel asks you what you want to insert, do you want to insert the entire row or you want to insert the entire column?
सो इस वक्त हम लोगों को कॉलम चाहिए। वो एक बात याद रखना एवरीवन, दर्शन, कि वेन एवर यू, नहीं सबको ऐसे ही मैं नाम दे रहा हूँ, वेन एवर यू से आई वॉन्ट टू इंसर्ट अ कॉलम, columns will always get inserted left side। देखो रियल टाइम डेटा में आप लोग तकलीफ में आ जाओगे, अभी तो ये प्रैक्टिकल डेटा चल रहा है, रियल टाइम डेटा रहेगा तो आपका गलती से कि तो दूसरा कॉलम ऐड हो जाएगा ना, तो आप कंफ्यूज हो गया, अरे मेरा डेटा किधर चला गया, आई हैव लॉस्ट माय डेटा। अ कॉलम विल ऑलवेज बी इंसर्टेड टू द लेफ्ट साइड। अभी तुम किधर है, यू आर ऑन डी, आप सरनेम पे बैठे हो, यू आर सिटिंग ऑन एक्चुअली सरनेम एंड यू आर एडिंग वन कॉलम, सो योर कॉलम विल बी एडेड बिफोर सरनेम। अब जैसे मैं ओके करूंगा ना, तो नेम और सरनेम के बीच में एक कॉलम आ जाएगा, which I never wanted this, है ना? So I will use Control Z again. What I wanted is I wanted between product and surname. So you come onto the product and then you do it. But I don't do. मैं तो ये नहीं करता हूँ, मैं कभी भी ऐसा राइट क्लिक मार के ये सब नहीं करता हूँ। Okay. And what do? I tell you one thing. मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोडक्ट पे आ जाता हूँ and I will use a shortcut key called Control plus button. Plus मतलब add. तो जस्ट मैं जैसे ही कंट्रोल प्लस दबाऊंगा, द सेम डायलॉग विल कम। देखो सेम चीज आ गया, इज आस्किंग मी, हाँ बोलो सर, व्हाट यू वांट टू इंसर्ट, यू वांट टू इंसर्ट अ कॉलम और अ रो, पूछ रहा है। तो यू क्लिक ऑन दिस एंटायर कॉलम एंड देन यू से ओके एंड यू सी दैट यू गेट अ न्यू कॉलम बिटवीन सरनेम एंड प्रोडक्ट। ठीक है, बट हाउ आई डू, मैं क्या करता हूँ बताता हूँ आपको। अब इसमें क्या होता है कि थोड़ा impression डालने का है। Suppose if you want to put some impression of yourself to the person who is sitting next to you, याद रखना कि whenever you use mouse, this is just my personal suggestions to you all. Whenever you use mouse, the person who is sitting next to you who doesn't know anything, he will also say that I know everything because he saw you doing that. तो आप ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, okay, then you go to insert, यहाँ से भी करेंगे, and यहाँ पे है क्या, किधर insert column में तो कभी गया नहीं, it's in home, sorry, home में जाऊँगा and then from here I say insert and I say I want to insert column दिख नहीं रहा है यहाँ पे, कहाँ है, इधर ही होना चाहिए था। Okay, insert cells आ गया because I have selected the entire thing ना, मैंने इसको पूरा select कर लिया, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, I want to insert cell. If one was selected only, now it is giving me the option of insert sheet column, तो वो आ गया। ये भी एक मेथड है। So if you do in this way, then you know what will happen, वो बाजू वाला आदमी रहेगा ना, वो भी सीख जाएगा। Okay, so all, तो मैं कभी नहीं करता, I always do like this. Okay, I want to insert a column. So what I'll do, I'll come onto my, यहाँ पे आ जाता हूँ, एक सेकंड में तो उसको पता भी नहीं चला कि डायलॉग बॉक्स भी नहीं आया, कैसा किया, वो बाजू वाला पूछेगा तुमको, राइट? तो इसमें थोड़ा सा आपका ये क्रेडिबिलिटी बढ़ जाता है कि वाओ स्मार्ट लड़का है, काम हो जाएगा। राइट क्लिक, गो टू इंसर्ट, एंटायर कॉलम चलता है, नो प्रॉब्लम, और सिलेक्ट द प्रोडक्ट and press Control plus, that will also do the same thing. Or don't select anything, go to insert columns directly here, तो भी हो जाता है without any keyboard। या फिर select the column first. How do I select the column? मैं कहीं पर भी रहूंगा, wherever I am, I want to select the entire product का column, so I will press Control space bar. Control space bar will select the active column, पूरा column select हो जाएगा। देखो आप, आ रहा समझ में? Wherever you are, suppose I am here, I am in S column, you press Control space bar, the entire S column is selected, and once the entire column is selected, you just press Control plus now, that's all. अभी आप Control plus दबा दो, तो एक column आ जाएगा। So you come here, press Control space bar, the product column is selected, now I press Control plus. ठीक है, simple. Yes, sir. If I want to insert one row more between Ramson and Rahul, ये लोग दोनों के बीच में मुझे एक रो ऐड करना है, बिकॉज एक दर्शन नाम का एक लड़का था, उसका मैंने रो ऐड नहीं किया था, I forgot to enter the record.
So that should come after Ramson. So what I do, I select the entire row first. Shift space bar. Control space bar से column select हो जाएगा, याद रखना. And shift space bar से row will get selected. See, I press shift and space bar. Okay. Now I press control plus. कंट्रोल प्लस करूंगा उतना रोज इंसर्ट होते जाएगा. Any questions? How do I delete the rows? Select the rows. जितना रोज डिलीट करना है सिलेक्ट करो और क्या करेंगे शॉर्टकट की. चेतन, टेल मी द शॉर्टकट की फास्ट. Control D, sir. कंट्रोल डी से कुछ नहीं होता. Wrong shortcut की. चेतन, कंट्रोल डी will do something else. Control minus. Minus is the correct answer. किसने बोला? किसने बोला ये? प्रकाश किधर दिख नहीं रहा? अच्छा, प्रकाश ऊपर बैठे. अरे क्या बात है प्रकाश जी. सही जवाब. पूरे 5,000 रुपए जीतते हैं आप. कंट्रोल माइनस इज द करेक्ट आंसर. जैसे मैंने कंट्रोल माइनस किया, देखो क्या हो रहा है. आई डोंट वांट, मुझे ये नहीं चाहिए था. दिस ये डायलॉग बॉक्स नहीं चाहिए था. आफ्टर सिलेक्टिंग ऑल दिस रोज, मैं चाहता हूं कि जैसे कंट्रोल माइनस करो, इट शुड गेट डिलीटेड. व्हाट डू आई डू नाउ? Select the row. Shift space. आई हैव ऑलरेडी, मैंने ऐसा कर दिया है, राइट. अब मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट और स्पेस. Control space bar. अब जैसे शिफ्ट और स्पेस दबाऊंगा, Yeah. it will get selected. Now I press control minus, so all my rows are gone. Yes. So it will not ask me anything. चलेगा, पूछेगा तो भी ठीक है. तो ये हो गया. I will also delete the column now. So I come here and I select my entire column. I press control minus. Column भी delete हो गया. Very nice. So you all know how to add. So if you want to add anything, it's always control plus, and if you want to delete, it's control minus. Now let's see that I'm giving the bonus to my employees. मेरे employees को bonus दे रहा हूँ या फिर marks दे रहा हूँ, whatever. मैं students से तो marks देता हूँ. So let's see that bonus. Right? Oh my God. Okay, sorry. So अभी bonus डाल रहा हूँ मैं. It's 5. Example. चल रहा है. So आप लोग क्या कर रहे हो? 90% of the time what people do, book रहता है and they are doing the entries, right? वो लोग entry करते हैं. सब देख के entry करते हैं. Say after hundreds of entries, आपको पता चलेगा बाद में कि the entries जो जोनाश तक सब राइट था. ये जो जोनाश है ना, यहाँ तक तो सब राइट था. जूड से गड़बड़ कर दिया आप. क्या गड़बड़ किया मालूम है? ये जो जूड है ना, इसको आपने 77 डाला था. एक्चुअली जूड का 150 था. आपने जूड को 150 दिया ही नहीं. ओके, यू गिव 77 टू जूड, तो फिर ये 77 एक्चुअली जेम्स का था. जेम्स का 77 बोनस था. तो 55 किसका था? 55 लीन्स का था. 66 अंशिका का था. समझ में आ रहा है? हिमांशु अलग अलग था सबका. सो 44 इसका नहीं था, इसका 66 था. तो ऐसा सब चल रहा है. इसका 22 नहीं था, इसका 44 था. सो मिसमैच हो गया. सो ओनली टिल हियर यू वर राइट. लेट्स से यू वर राइट टिल हियर, और फ्रॉम हियर यू डिड अ मिस्टेक. इंस्टेड ऑफ राइटिंग 150 you wrote 77 which was of this person, 55 was of this person. तो ऐसा एक skip हो गया, तो it was throughout you did that mistake. ये बहुत common mistake है. Now what I wanted over here, instead of 77 आपको क्या चाहिए था? 150. 150 चाहिए. तो फिर ये 77 किधर जाना चाहिए? नीचे. James को मिलना चाहिए, and so on, right? So what I will do, I just want one house over here. I just want one empty cell over here. So I don't want to insert a row. ना ही मुझे अभी रो में इंटरेस्ट है, ना ही कॉलम में. मुझे एक खाली बॉक्स मिल जाए ना, एक नया, एक न्यू बॉक्स, a new cell. So I will keep the cell on 77. So whenever you add, जैसे हम लोग ने रो ऐड किया, कॉलम, whenever you add a cell, एक सेल पूछेगा कि if you are adding a new cell at this cell, तो मुझे बोलता है कि इस सेल के अंदर जो भी बंदा रह रहा है उसको किधर भेजने का, नीचे भेजू कि राइट में भेजू. देखने का आपको
press Control plus. Same shortcut key है. To insert a row, to insert a column, and to insert a cell. It's the same shortcut key, Control plus. जैसे ही मैं Control plus दबाता हूँ, see what happens. He's asking you, I will add a new cell, but where you want me to shift the tenants, जो उसके घर में जो already रह रहा है, उसको किधर धक्का दूं? Right side दूं, or you want me to push down? I say please push it down. वो 77 को push करके नीचे धक्का मारेगा, and then 55 will be pushed down, and you will get, everybody will get their own bonus. Okay. So in this way, keep the habit of shifting cells down in this way. Never drag it and pull. Clear, everyone? Yes, sir. Give me a thumbs up. The name column should be after the date column. Okay. I want to sort this, the order of my field names, where I want the name to be on the second position after the date, and the salary should be last week. What do I do? How you people do? आप लोग सब लोग कर सकते हो. I know everybody can do that, but I just want to know कि how you all do these things. आप लोगों को ऐसा टास्क करके मिलता है कि just shift ये जो name है उसको मुझे डेट और सैलरी के बीच में चाहिए, and I want salary next time. नेम के बाजू में आ जाना चाहिए. क्या करोगे? सर जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसमें तो सैलरी को कट करके लास्ट में जे में पेस्ट और यहाँ पे ये सब शिफ्ट हो जाएंगे. वो बेसिक बाकी शॉर्टकट तो नहीं आइडिया नहीं सर. ओके दिस इज द नॉर्मल वे. तो यूजुअली पब्लिक क्या करती है, मुझे सिर्फ अगर मैं आपको बोलूं कि आई वांट सैलरी का कॉलम ओवर हियर एंड नेम का कॉलम ओवर हियर, सिंपल स्विच करना है. तो यू नो हाउ पीपल डू. स्टेप नंबर 1, they will come here, select the entire column, press Control plus. ठीक है, एक नया कॉलम आ गया. Then they will come and select the entire name का column, and they press Control X या फिर Control C कर दो. कोई I don't know whether you people know Control X or not. चलो आपने Control C कर दिया या X कर दिया, whatever it is like. And then I come here and I press Control V, and then I come again here and press Control minus. आ रहा समझ में? So once more. See, it's simple. मुझे क्या चाहिए था, अब मैं आपको बोलूंगा कि I want सैलरी का कॉलम टू बी बिटवीन लोकेशन और आईडी के बीच में चाहिए सैलरी. तो आप लोग क्या करोगे, पहला तो मुझे लोकेशन और आईडी के बीच में कॉलम डालना पड़ेगा ना एक्स्ट्रा. तो मैं आईडी पे आ जाऊंगा. आई प्रेस कंट्रोल प्लस सो दैट आई गेट वन एक्स्ट्रा कॉलम ओवर हियर, यहाँ पे मेरा सैलरी आएगा. देन आई विल यूज दिस एंटायर सिलेक्शन. आई प्रेस कंट्रोल सी, आई कम हियर, आई प्रेस कंट्रोल वी, सैलरी आ गया ना. अब ये सैलरी को उड़ा दो, सिलेक्ट दिस एंड प्रेस कंट्रोल माइनस, द एंटायर कॉलम इज गॉन. So this is the method, but it's so lengthy, yaar. Sridevi wants to say something. Nothing, sir. Nothing. चलो मैं अपना तरीका बताता हूँ आपको, मैं क्या करता हूँ. अगर मुझे फॉलो करना है तो करो बिंदास, आप अपना भी कर सकते हो. लेट्स से कि लेट अस टेक इट इन दिस वे कि कहाँ पे करें, सैलरी को उठा के डिपार्टमेंट और पोस्ट के बीच में करते हैं. Okay, let's say कि salary, I don't want salary over here and I want in between here. ठीक है, तो क्या करता हूं देखो मैं, I will select the salary का column. How I select? Control space bar से select कर लिया. I will press Control X now. X for cut. Cut मतलब काट दो इधर से. I don't want it over here. I press Control X. Okay. After that, I come on to my post column and I select my post column. Okay. And I press Control plus. Control plus क्या करता है, एक नया कॉलम ऐड करता है लेफ्ट साइड में. अब वो पता है क्या करेगा, वो नया कॉलम ऐड करेगा, लेकिन वो जो मेमोरी में पड़ा है ना, now you just see the magic, सैलरी का कॉलम अपने आप शिफ्ट हो गया.
दिस इज द आइडियल मेथड विच विल से आपका डेटा गड़बड़ नहीं करेगा. अगेन वी विल डू वन मोर टाइम. दिस टाइम आई वांट माय पोस्ट का कॉलम शुड बी आफ्टर नेम एंड सरनेम, मतलब बिफोर द प्रोडक्ट आई वांट नेम, सरनेम एंड द पोस्ट. ठीक है, तो क्या करता हूं देखो, मैं आई विल सिलेक्ट माय पोस्ट कॉलम, आई प्रेस कंट्रोल एक्स, यहां से तो निकाल भाई, कंट्रोल एक्स, रिमूव इट फ्रॉम हियर. देन I will select my product column and I say control plus here. Your post is shifted over here. All well till now? Do you want any more? इससे भी easy method चाहिए कुछ? चलो इससे भी easy method ले लो. मानसा बोल रही है, मानसा सॉरी. सर हम लोगों को याद नहीं रहता है, we don't remember it. ताना you are okay? आपको सुनाई दे रहा है ना बस? Am I audible right to you? Yes, sir. Okay. नहीं साना को Yes, sir. सहाना को. Now एक सिंपल मेथड, अगर आपको लगता है कि ये मुश्किल है तो आई विल गिव यू द वेरी सिंपल मेथड, बेस्ट मेथड, वेरी हिडन थिंग, किसी को पता भी नहीं है ये वाला, मुझे पता है, पता नहीं पता रहेगा भी नहीं, पर मैंने नहीं देखा किसी कि सपोज इफ आई वांट, लिटिल डेंजरस है लेकिन ठीक है, काम चल जाएगा. इफ यू आर गुड ऑन माउस, आई वांट टू शिफ्ट माय पोस्ट कॉलम इन बिटवीन डिपार्टमेंट और आईडी के बीच में, मुझे ये पोस्ट डालना है. ठीक है, शिफ्ट करना है. तो देखो क्या करता हूँ, आई विल सिलेक्ट माय एंटायर पोस्ट, शिफ्ट को दबा के रखो, शिफ्ट को दबा के रखो, कम ऑन टू द बॉर्डर. दिख रहा है आपको, बॉर्डर पे आ गया मैं. जस्ट सी हाउ योर माउस बिकम्स. क्लिक, डोंट लीव एनीथिंग, क्लिक करके ड्रैग करो. कहां रखने का, यहां रखना है. अब यहां रखोगे तो प्रोडक्ट और लोकेशन के बीच में आएगा. नहीं सर यहां रखो, अभी लोकेशन और आईडी के बीच में आएगा. यहां रखना है, रख दो. डोंट लीव द शिफ्ट की, फर्स्ट यू लीव द माउस एंड सी व्हाट हैपेंस. शिफ्ट हो गया. ठीक है, say for example I want to shift my salary column in between date and name, so I will first select my entire salary column, hold the shift key और पकड़ के खींच दो. चलो कहां जाने का, इधर आ जाए. चलो शिफ्ट की को पकड़ के रखने का, नहीं तो गड़बड़ होगा. I think this was unknown to everyone, not known, right? How do you insert the sheet? Shift F11. एक नया शीट डालना है ना, you can see एक नया शीट आ गया. ठीक है, how do I jump from one sheet to another sheet without using mouse? By control page down. Control up and control Page down, right? Okay, let's see what happens if because many times what happens, many times we mouse doesn't work or we have some challenges with the mouse, right? So we get stuck. So control and page down will take you, see, you can just see how we are switching from sheets. And page up will take you to the previous one. देख रहे हैं आपको? तो प्रैक्टिस करने के लिए. And the basic things are like just you can also double click, or I can also move my sheets by using the clicking on the mouse and taking it over here. I can just move it anywhere. I can keep it over here, so I can make it in this way. अभी M sheet है. I just want this M sheet to be it should be here. इसको उठा के यहाँ रख दूंगा. ठीक है ना? Okay, but now I want this. Let's say add one new sheet, but it should be after M sheet. But what happens, normally what happens? When you press Shift F11 क्या होगा मालूम है? देखो क्या होता है. स्टार्ट में होगा सर. किधर होगा? बिगनिंग. एकदम बिगनिंग में चला जाएगा. ऐसा नहीं चाहिए था. मुझे एम्प के बाजू में चाहिए, तो क्या करूं? I can just see this.
वर्कशीट और एक ऑप्शन था, ये तो इधर ही आ गया, ठीक है। ये तो अपन एम के बाजू में चाहिए तो एम के बाजू में करेगा, बिकॉज आई हैव टू बी ऑन दैट शीट. You can also add, you can also copy. I want to make a copy of this M sheet. So I just right click on it. I just say I want to make a copy here. When you just say I want to move or a copy, it'll ask you that do you want to move this? Okay, I want to move this. Where you want to move this? I want to move this after my say sheet. कौन सा sheet है ये? M sheet है ना? Move it after sheet 7. मतलब sheet 7 के अंदर move करने का. तो ये copy करेगा या move करेगा? ठीक है? कौन सा sheet है ये? Sheet ऐसा data analysis है, right? So I say move this sheet, create a copy. Okay, before which sheet? Before this sheet. So it will create one more copy of this one. This copy कर सकते हो आप. You can make 2 sheets of this one. I can also hold. देखो control दबाऊंगा ना मैं. If I hold the control key, then you also get directly a copy. I will delete one more time. थोड़ा सा fast हो रहा हूँ तो. ये sheet 3 है. If you don't press control key and if you drag it, ये move होएगा यहाँ से. Move होगा. ये move हो गया. देखो sheet 3 अभी sheet 5 के पहले आ गया. इसको मैं यहाँ रख देता हूँ. And if you hold the control key and if I drag it down, तो sheet 3 का और एक copy बन गया. ठीक है ना? Right click it and just say delete. I don't know. किसी को sheet delete करने का shortcut है तो बता देना मुझे. मेरे को I don't remember the shortcut key now. How to delete the sheet? The shortcut key. Because deletion का काम बहुत कम होता है. We never delete the data. We never delete the sheet. Okay, वो एक murder हो गया. So murder करना मैं कभी murder करता नहीं हूँ इसके लिए. So ये हो गया. And और एक क्या important था ना? Okay. Hold the shift key to select all the sheets at the same time. इसके बाद बताऊंगा मैं क्या कर सकते हो. एक बार sheet सब select कर लिया तो क्या होगा? बहुत कुछ magic होगा. उसके बाद क्या था? Nothing. So I think we finished with everything, the basic things. And the next lecture we'll start with. We'll drive on in second gear. So we first gear से मैं second gear में आऊँगा. Okay, so slowly we will increase the gears. Third, fourth, fifth पे जाएंगे last में. So ठीक है. I don't. Next lecture is on Monday. Just we can just see the. Sir, I think so. Next lecture is on Wednesday. Yes. We have a 1 week gap. Yeah, I'll tell you why this happens actually. Your lectures will be on Monday, Wednesdays, and Fridays. Yes, sir. Okay. So Wednesday, you all don't have any sessions because there are more students coming in this batch. Most students are joining in this batch. So the same lecture what I took today, right? So I'll be repeating the same thing again. So these people must have not called you. ये तो आप लोग बोर हो जाओगे वापस से. फिर से मुझे सुनोगे. So the same lecture will be repeated on Monday, and after that Wednesday को when you join, so those will be parallel to you all. इसीलिए आप लोगों को मंडे को नहीं बुलाया गया है ताकि आप बोर ना हो जाओ फिर से. ठीक है? Any questions? नवीन, मानसा भूल गया था नाम. मानसा है ना? मानसा. प्रकाश जी, all well? And I request कि जिन लोगों को मैंने देखा नहीं है, श्रीदेवी, निपुण, संदीप, Yes, sir. आप लोग आ जाओ नेक्स्ट लेक्चर में मस्त तैयार होके. डबल लॉगिन करके सर. शाबाश. यस. तो मैं कंपटीशन भी रखूंगा. सबसे बेस्ट पर्सनालिटी कौन है, तो तब तैयार होके आने का. ठीक है. स्माइल नहीं देते तुम लोग यार, पे बोलते नहीं. See you people on Wednesday with more new things. ठीक है? तो चलो मैं. Yes, sir. Good night, sir. Okay, sir. Bye. I hope you all enjoyed this. Bye, sir. Yes, sir. Bye. Bye. Take care all of you. Good night. So hi everyone. I don't know how many of you have joined today first time, but I hope that we have already met before. Okay. So last time जो भी हमने cover किया था, it was very simple thing. What I covered was the basic things: how to insert a row, how to insert a column, how to insert a sheet, how to rename a sheet, and let's say how to directly go to a one Excel particular में जाना है तो press F5 function key, right? ये सब किया था. So now you are in cell A1, right? And if I come on to the A1, it means again my active cell is A1, and I suppose if I type something else, if I type something mango, you will see that the existing data goes, right? Yeah. Do you really think that the existing data is gone? No.
You know why? Because you have still not confirmed, you have still not committed your order. ये waiter है, A1 is a waiter whom you are placing the order. You have asked that waiter to get mango for you, but he's still standing in front of you, so that you say go, then only he will bring for you. And if you want to say go, then you have to press enter. And if you really feel, no, sorry, wait, I want to cancel my order, then you just need to press escape key. So once you press escape key, means get back my existing data. ये छोटी छोटी चीजें. So if any particular cell, if you are in the cell and if you type anything, the existing data goes, but tension मत लो, you press escape, it will come back because you are cancelling your order. ठीक है? एकदम simple चीज है ये. Okay. Now, suppose I wanted to write here pineapple, and I wrote apple. So what people do, normally people do, what? If you want to make it pineapple, they come here and they just type pineapple. But if you type pineapple, the existing data goes. इसके लिए pineapple पिलाने के लिए तुमको पूरा निकालना पड़ेगा. But what you should do, you press F2 function key. Okay, once you press F2, you will see that you will get the cursor inside. Again, you are into editing mode. And now I can play with my cursor. Come here, fine. छोटा चीज है. After that, you just press enter. F2 function key का मतलब होता है editing. You go into editing mode. Okay, next one. You know what is this? Formula bar. Formula bar is a bar which shows you. Formula bar will always tell you that what exactly is in the cell. बहुत बार क्या होता है पता है आपको? जो इंसान जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है. वो लोग सोचोगे सर कितने फिल्मी है. फिल्मी नहीं हूं मैं, लेकिन ये रियलिटी है वो. But I'm really very fond of films. तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है वो ऐसा जरूरी नहीं है. तो एग्जांपल ले लो कि मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ तो if I ask you what is there in E8, तो आप क्या बोलोगे? सर 60. फॉर्मूला बार में देखो 60. चलो आई टेक अ टेस्ट. एक टेस्ट लेता हूँ. नुसरत जी आप हमें बताइए कि B3 में क्या है? बच्चन. आप पूछ रहे हो या बता रहे हो? I'm saying B3 में बच्चन है. Right. So let's check it out. पक्का ना? आपको लाइफलाइन नहीं चाहिए कोई? नहीं. पूरा लॉक कर दूं? Yes sir. ओके, तो लॉक किया जाए. बच्चन को लॉक करें. सोचो आपको केबीसी खिला रहे हैं, आप उनको लॉक करें. B3 में नुसरत बोलती है बच्चन है. लेट्स चेक इट आउट. ओह अफसोस नुसरत रहमानी. Yes sir. क्या कर दिया आप? नहीं सर, एकदम सही है. B3 में नहीं है. देखिए, अगर फॉर्मूला बार कभी झूठ नहीं बोलता है नुसरत. हाँ. अगर बच्चन साहब होते तो फॉर्मूला बार में दिखते. ये इसके लिए नहीं दिख रहे क्योंकि आप भी नहीं दिख रहे हो. आप दिखते तो बच्चन भी दिखते उधर. एनीवेज, चलो कोई नहीं. नुसरत थोड़ी देर में आ जाएगी. डोंट मुझे टेंशन मत ले. नुसरत इज कमिंग, डोंट वरी. ओके, सो सहना. Yes sir. वेयर इज बच्चन? B3 sir. अरे सहना भी B3 बोल रही है. B3 में नहीं है ना बच्चन. दिखता ना होता तो. देखो इधर शर्मा है, देखो दिख रहा है. हाँ सर. इधर कोहली है, दिख रहा है. रोशन है, दिख रहा है. बच्चन नहीं दिख रहे क्योंकि बच्चन वहां पे है ही नहीं. आप डिलीट करो. नहीं डिलीट हो रहा है. इसको डिलीट करता हूं, इसको डिलीट करता हूं. नहीं हो रहा है. ये सब हो रहे हैं बिकॉज देयर इज नथिंग ओवर हियर. सिंपल सी बात है. ये एक्चुअली A3 में है पूरा. ओह. ऐसे ही मैंने थोड़ा मजाक किया था आपके साथ. तो क्या होता है, कभी कभी मैंने बोला ना सच्चाई छुप नहीं सकती फॉर्मूला बार से. फॉर्मूला बार बोल रहा है कि A3 के अंदर ही है सब कुछ. राइट. क्यों बोलो ऐसा क्यों हो गया निरुत्तल? तो आपको सर निरुत्तल सर बताएं. हाँ, ये एक्चुअली हम A3 में छोटा डेटा है. इसके लिए ये जो फॉर्मूला बार में दिखता है अमिताभ स्पेस देके और बच्चन, इसका मतलब होता है कि वो पूरा का पूरा A3 सेल में ही है. वो दिखा रहा है B3. यू नो व्हाई? बिकॉज ऑफ स्पेस. तो कभी भी याद रखना. अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा कि पोपट लाल. ठीक है, पोपट लाल. अभी मैं स्पेस देता हूँ. अभी और लिखता हूँ. सॉरी, क्या हो गया? व्हाट डू यू फील? That Hasmukh Lal is over here? No, the entire Popat Lal Hasmukh Lal is over here only.
but because there is no space over here, तो चला ही जाएगा ना वहाँ पे. It will definitely go on to the next cell. It's called overlap. तो कभी भी ऐसा आएगा तो क्या करने का? Muzahar, what you will do? Sir, you're talking about the cell like Popatlal and Hasmukhlal, both are same. So Yeah, I both think are actually it's in cell. one cell, but because there is no space in the column, you need to increase the space, right? Yeah. If you want to increase the column width, then you just need to double click over here. याद रखने का. How do you increase the column? By just pressing double click over here. So double click, याद रखना. Double click to automatically adjust your column width. So whenever you double click on it, the maximum size, wherever suppose if down, you have the maximum length. According to as per that length, the entire column will get adjusted. Correct? Yes, sir. Is that clear? Okay. Now, suppose if you have multiple columns also, then also you can automatically adjust your columns. Say for example, okay. Now say this is my RNO, this is my employee. ऐसा कुछ लिखा हुआ है. This is location, sales, and so on. Okay. And now if you select all your columns and double click on any one of them, automatically all your columns will be adjusted as per their requirements of the data. Okay? ये याद रखने का. Same thing if I select all my rows and if I just see this, if I drag it this way, only one row, all my rows will be automatically adjusted. एक एक करके सबको नहीं करने का. ठीक है? This is my sheet. I want to insert one row on the top because I want to write a title. Now see what will happen here. Select the row, press Ctrl plus. One row is adjusted, and here I want to write the title called salary statement for the year. Salary for the year 31st March 2023. Okay. Now suppose this is my title. Okay, and now suppose in future when you come down and you just type one of the employee coming in between, say I say Larsen and Togo. This is a company, suppose. Now you can see that ये बाहर गया ना. Now what you will do? You will double click over here. Yes, sir. Once And we you can double click, increase the what will cell. happen? You know what will happen? I'll tell you. Now, if you double click over here to get this adjusted inside your column A, you will find this now. See, this will happen. आप लोगों को समझ में आ रहा है? मैं या प्रकाश कुमार, you are asking me something? Sir, we can do merge across. Ay, shabash. Okay, so this is what I was about to tell you. This happens when you do like this, because whenever you double click, Excel will automatically take the most largest cell in the entire column, and as per Excel, this is the largest cell. तो वो इसने इसको पकड़ लिया. So I just don't want to consider this my title over here. So what I will do, I will merge across. So what I will do, I will select all my cells till here. Okay, and I just click here. You can just see this merge and center. So now this becomes a single cell. Merging cells. I can merge the cells horizontally or vertically. Now why to merge? ये भी देख लो. Whenever you merge the cell, it means you are actually combining all the cells. Say for example, you have 3 BHK का flat, 3 room kitchen का flat. मैं बोलूँ एक काम करो, सब room तोड़ दो और एक बड़ा hall बना दो. It means you broke all the walls and now you have only one room, but it's a big room. In the same way, suppose here I have K1, K2, and K3. And if I click here, you can just see this. यहाँ पे लिखा हुआ है, it's K1. If I select 1, 2, and 3 cells, I think it's 1, 2, and 3 cells. And now if I merge these cells,
Now this cell is one cell now, और इस cell का नाम है K1. I don't have any cell called K2 and K3. वो भी याद रखना. अभी हमारे पास में K2 K3 नाम का कोई cell ही नहीं. I directly have K4. So K1 and K4. Because K1, K2 और K3 का तो एक ही रूम बन गया. There is only one room now, right? Is it okay, everyone? ठीक है ना? Okay. So what is the benefit of this? After you merge this cell, and now if I double click over here, you will find that Excel is not considering this one. See, ठीक है ना? And why to merge across? Because if you feel that you have a single say sales or anything which is common in between something, all the 3 or 4, so I can always merge this and I can write some figures, something like this, and then you can format this, you can decor this as a background, and I can also do something like align this one. Okay, ये सब करते रहने का. These are all just to play. So something which is important for you, you can always have different format. Very most important part. I will write some numeric values, right? I'll write some numbers, and we'll see that which is the best method that you feel that it has to be. There are some numbers here. और सब अपने अपने स्टाइल में जीते. Everybody has their own hairstyles. In the same way, everybody has their own handwriting also. Every one of you must have different ways of writing the numbers, different ways of writing the alphabets. तो चलिए सबसे पहला सवाल मैं पूछूंगा राम्या. A2, sir. Ramya, Yes, sir. now you tell me this 1000 that I have written here 5 times. What do you feel? Which 1000 is correct? The first, second, third, fourth, fifth, or all, or one, or third, or the second, or fifth. I don't know. It can be all my values, but what you feel, which is the correct written value? If it is represented in rupees, the fourth one is correct, sir. If it Okay, is you feel that the fourth one which is representing the currency symbol, right? yes, sir. Write your name here that Ramya given. Okay. Yes, Saxena. Yes, sir. Sir, I think A1 is correct. Okay. Pujit, बोलिए सर. मैं बोलूं? ऑफिस से बोलूं? नहीं सर, अगर आप लिखा है तो सब कुछ ठीक ठाक ही रहेगा ना. अरे क्या मतलब तुम सब पे हाथ रख रहे हैं क्या? सब ठीक है सर. सब ठीक है. ओके, प्रकाश. Yes, sir. आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा राइट है? Sir, depends upon profile. Like second one is better. आपको बेटर लगा. ओके. Now, why I'm asking you this? I'll tell you one thing. मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि why I meant. Right. Even I'll ask Anirudh, what you feel? I think none of the above because all are in the text format. Okay. Okay. None of them. Fine. Mansa, Yes, sir. क्या लगता है? The second one, I think, sir. Now, I'll tell you one thing. Excel is, you know why Excel is so strong? Because Excel can identify your keyboard inputs, right? So he understands whether you are typing values, or you are typing labels, or you are typing operators, and so on. Sorry, spelling is wrong, but fine. Excel understands this, and from the entire keyboard of आपका जितना भी ये जो keyboard है ना आपका, ये देखो आप मेरे कैमरे में, this entire keyboard is divided only in 2 categories. पूरा कीबोर्ड को 2 ही कैटेगरी में डिवीजन हुआ है. एक है लेबल्स और एक है याद रखना है. सो एक्सेल को क्या करना है? एनीथिंग फ्रॉम 0 to 9 is values. याद रखना. सिर्फ 0 से लेकर 9 तक वैल्यूज है. रेस्ट एवरीथिंग लेबल्स का मतलब होता है टेक्स्ट. टेक्स्ट मींस जिसके ऊपर कभी भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं हो सकते. ओके, एप्पल प्लस मैंगो हैज नो मीनिंग एट ऑल, बट 5 + 5 will always become 10. आ रहा है समझ में? a plus b no meaning. You cannot have a plus b until and unless a has some values.
तो नाउ टेल मी फ्रॉम हियर आई विल स्टार्ट. तो मैं सबसे इसका करेक्ट आंसर बताऊं क्या दूं? क्या होगा इसमें से करेक्ट आंसर? A2. करेक्ट. जो भी करेक्ट आंसर है मैं उसको रेड कर देता हूं. ये सब रॉन्ग है, करेक्ट एक ही है. श्रेयस ने ऐसे ही, सच्ची बोल ऐसे ही गोली मारा था ना श्रेयस? हाँ हाँ सर, मैंने सोचा नहीं ज्यादा मुझे. Okay. You know why? Because this is pure number. इसमें मुझे बताओ there is anything mixed. Here you have a full stop. No, So sir. see why I'm teaching you this, because now Excel has become very smart. Don't have to worry about that. But I'm talking about when Excel started with this principles, it started with labels and values. Okay. So वहाँ का आदत है हम सबको कि you should be very careful when you put any inputs. So commas, rupees, and these are all text infected values. याद रखना. Only the pure value is 1000 without any full stops, without any commas, and without any rupees or any other symbols, right? Because अगर आप ऐसे लिखते हो 1000, this will never become a value, right? मैं लिखता हूँ rupees 1000, ये सब टेक्स्ट हो जाएगा. इसके ऊपर कभी भी आप नहीं कर सकते. लेकिन जैसे मैं अब देखो आप कैसे समझ गया वो. You type here 5, you type here A, see what happens. So 5 is always right aligned, A is left aligned, because Excel understand that this is a text and this is a number. ठीक है ना? इतना समझ में आया? Yes, sir. How to solve this problem? Means आप बोलोगे सर ऐसा थोड़ी होता है क्या? Then how will I write this? How will I write 100.00 और ऐसा सब कुछ? बिल्कुल. You can write everything and still it will be number. But for that you need to do something. You cannot just expect कि आप लिख दो और Excel समझ जाएगा. ठीक है? चलिए शुरू करते हैं. But now here we want decimal tree. Means if I type here 10, if I type here this, I should get my decimal points, right? If I write this, it's not giving me. तो क्या करना पड़ेगा? या फिर पहले से लिखा हुआ है. Suppose if the numbers are already typed, and now I want this to be in decimals, then what to do? So select this and press Control 1. I have this option also over here, but later on will come this. Press Control 1. जैसे आप Control 1 दबाते हो, you will come here. ठीक है ना? बताइए क्या है? These are all seeds. ये सब different seeds हैं. So you can see the seeds. तो सबसे ऊपर जो है ना, it's written general over here. So by default, all your cells into general format. Now what is general format means? It's neutral. कुछ नहीं है. No format applied. So let's say that you want the selected cells. जो भी यहाँ पे selections है, always first select the cells. याद रखना. If you do not select anything, and suppose you are over here, some other cell is selected, and you wanted something to come over here as a decimal, and you press Control 1. So you know what will happen? ये जो है ना, ये cell, whatever you will be applying, it will be applied to this cell. So you just take care कि आप पहले select कर लो. उसको बोलो Excel को कि सब लोग सुन लो. So now you are talking to this bunch of cells. याद रखना, अभी ये लोग सब लोग एक्टिव हो गए. ये लोग सब लोग आपको सुन रहे हैं. और मैं इन सबको बोलता हूँ कि गांव वालों सुनो, तुम लोग सब लोग जितने भी सिलेक्टेड है ना, I just want you be in number format, and that also decimal should be 2. बस इतना बोल के इसको जैसे ही मैं अभी ओके कर दूंगा, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अभी आप अगर 5 भी टाइप करके एंटर मारोगे ना, तो भी वो 5.00 ही दिखाएगा, बिकॉज आपने उसको पहले से बोल के रखा है. You just keep on typing. It will come till where see. But now if you come over here and you type, अच्छा ये लोग इसने अपने आप ले लिया क्या? इधर 10 तक लिया था मैंने. आई थिंक सबसे पहले मैंने सिलेक्ट किया था क्या? या आई थिंक क्या दिस इज स्मार्टनेस. वाओ. लेट मी चेक हियर. दिस ओके. नाउ आई जस्ट डू वन थिंग. एक्सेल वो स्मार्ट होते जाते हैं. आई कम हियर एंड आई प्रेस नंबर. ओके. आई टाइप हियर. देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है, बट नाउ सी. ओके यहाँ पे सी. You understood that the entire column should be in this much. आपने भले इतना सिलेक्ट किया. So actually this is over smart.
You shouldn't have done this actually. पहले वाले में ऐसा नहीं करता था. Only whatever you select, only that selection part comes. But now suppose if you don't want this, then what to do? You're getting me, Nilaptul? Yes, yes. Yeah, this is an error. I don't know. This shouldn't come actually. क्योंकि मैंने जब उसको select कर लिया, then also he is applying automatically understands. Okay, now say एक मिनट. Now say this cell is not at all formatted. Okay, what I will do now? Let me say that I want a comma tree. Comma मतलब let us grow a comma format. So I will select 1, 2, 3, 4, 5 cells and I press Control 1, and this time I go with number without any decimal places. But you can just check this box. ध्यान से देखो यहाँ पे. Check मतलब comma. I want a comma tree. You know what comma tree means? Okay, now see what will happen. If you type 1000 over here, ऐसे आ गया ना? But if I type 1000 over here, then so this is automatically comma separator. See, I wrote for 1, 2, and 3, but I think so. The Excel is giving me, and it understands because I am writing this above this. So automatically it accepts the above formatting. It takes that. नहीं करना चाहिए उसको, but ठीक है वो कर रहा है. Because if I don't want this, then I have to again select this and I have to change this to. I have to tell him that no, I don't want any formatting over here. Suppose if I ask you, remove all the formats from here. सब निकाल दो. All the formats. Then what you will do? You will select here. दिख रहा है आपको? This will select your entire sheet, and now you press the shortcut key, Control, Shift, and Tilt key. Control, Shift, and Tilt key. That is. Okay. So if you select everything, and I press Control, Shift, and Tilt key, you will see either से decimal चला जाएगा. From here the commas will go, and all my numbers will be simple numbers. Control, Shift, and everything is gone. अब ये क्या बन गया पता है? They are all now general format. ठीक है? It's very simple. So now if you type 10 here, it will be 10 only. So if the things are already written, तो भी टेंशन मत लो. अगर पहले से लिखा हुआ है, now if you select this, press Control 1 and ask him to do say currency. I want a currency symbol. I want this to be currency symbol. So which currency you want? I want Indian rupees. So I will go with rupees. बहुत सारे हैं. I have euros. I have say इसमें दिख रहा है आपको. I have English India. This one. Okay. ठीक है ना? देखो by default उसने ले लिया, सबको ले लिया. No questions, right? Select this, press Control 1. Let's say this time I go with accounting format. What is accounting format? Accounting format is very similar to your currency symbol, but it will always align your symbols and your values properly. Example, ये CLO use करते हैं. See, for example, I say I want Indian rupees. And now you can just see I wrote here 5, and here also if I write 5, see what will happen. So he is giving me in this way. See the way he is giving me output. So the symbols are left side and the values are right side. But different. Okay, now this time I will go with date. Date type. I'll just press Control 1. I go with the date here. Once I go with the date, is asking me what style, what format you want, how you want the date to come. I say, can you give me the format? Say something like this. So where I want the month name, the date, and the year. This is what I want my date to come like, to visible, right? अब जैसे इसको मैं ओके करता हूँ, वो बोलता ठीक है. अब याद रखना कि this much patch or then the column जितना मैंने सिलेक्ट किया, इन लोग सबको मैंने बोला है कि now whenever any values come to you, you convert those values into date. जैसे वो लोग कैसे किए थे, convert the values into currencies, convert the values into decimals. Now if you type something over here, suppose if I type here 2000 and you press enter, see what you get. Many times आपके साथ ऐसा होगा कि in particular cell, suppose you're typing something, a number, and you will see that, oh my god, my number is showing me like this. Why? तो आपके सब numbers ऐसे दिख रहे हैं अभी.
समझ में आ रहा है आपको? वो ऐसे क्यों दिख रहे हैं बताओ? क्योंकि आपने ही बोला है ना उसको, मैंने ही उसको सिलेक्ट करके बोला ना भाई कि तू इधर डेट दिखाने का, तो वो दिखा रहा है। एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चन? सीरियसली? No, actually, what I wanted to ask that this number, how it is equivalent to September 8, 1930. Yeah, that is the reason I asked. Really, you people don't have questions? Nilottal has asked me the question. The same question I wanted to ask you. डेट आ गया, तुम लोग खुश होकर ताली बजा रहे, ठीक है, अच्छी बात है। आपने ही उसको बोला था, आप लोग नहीं बोला था, हमने ही उसको सिलेक्ट करके बोला कि एक्सेल this much patch, whenever I type any values, you just convert it to date. Excel, you convert these values to currency. Excel, you convert these values to comma, to decimal. सब आप बोलते हो, वो कर रहा है। But the challenge is, बाकी सब तो समझ में आ गया सर, कॉमा समझ में आ गया, रुपीस उसने कर दिया, लेकिन डेट भी वो आ रहा है। but how Excel is giving me this date? The question is this, कि जब आपने 2000 आया तो why this date? Why 5000 के लिए ये डेट क्यों आया? How he calculated this date कि यही वाला डेट आना चाहिए? गणेश, पूछना बोलना है आपको? हाँ सर, बोलिए। एक्चुअली ये जो डेट है सर किस हिसाब से कन्वर्ट हुआ? जैसे आपने 2000 लिखा था, मैं वही बोल रहा हूँ ना, तो यही हमको जानना है। या हाँ, तो अभी क्या होता है ना, हैव यू हर्ड ऑफ ग्रेगोरियन कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर्स? ओके, अभी सुन लो आप, दो टाइप के कैलेंडर होते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर। ओके, बहुत पहले जूलियन कैलेंडर चलते थे, मतलब अ कैलेंडर इन विच there is no bifurcation of month, years, weeks. For example, वहां पे ऐसे चलते थे 1 2 3 4 5 6 28 29 30 डेट हो गया, then after 30 31 32 33 34 35 36, after 365 it is 366 367 368. आप समझ रहे हो? This type of calculating the number of days जितना हम लोग जिंदगी जी रहे हैं, the days are counted 1 2 3 4 directly without dividing the dates into years, months, weeks, hours, minutes. आज हमारा time is divided so much. You say you are in 2023 January, then it's Wednesday, रात के 9:35 PM. This is so much divided. So अभी जो मैं इसको Excel को नंबर दे रहा हूँ ना, तो Excel as per takes as a Julian number and converts my Julian number into Gregorian format. Example, ऐसे समझ लो कि Excel started numbering from day 1, मतलब 1 of Julian calendar is 1st January 1900 of Gregorian calendar. मान के चलो, मतलब अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा ना और एंटर मारा ना, तो Excel will change this number to 1st January 1900, क्योंकि उसका वहां से गिनती चालू हो, Excel यहाँ से गिनती चालू करता है। Converting your Julian to Gregorian, Excel starts from 1st Jan 1900 से वो शुरू कर रहा है। It means if I type 2, I will get 2nd January. Correct? Now my question goes to Ganesh. What if I write 32 over here? तो कौन सा जनवरी आएगा? तो 1 फरवरी। कौन बोला? नहीं बोला था, गणेश ने बोला नहीं ना? हाँ सर। ओके, 1st February is the correct answer because हमारा तो 31 ही है ना, तो 32 of Julian will be 1st February of Gregorian. आप समझ जाओ। अब मैं इसको 60 देता हूं, 2 महीना पूरा हुआ, लीप ईयर है, समझ में आ रहा है? 90 डेज, मार्च 30 तक आ गया, 180 डेज, जून 28 खत्म हो गया, एंड 365 इट्स दिसंबर 30 1900। लीप ईयर था ना, तो 366 इयर्स का हो गया वो, 31 दिसंबर भी रहेगा ना। समझ में आया? yes. तो अब आप लोग अपना दिमाग यूज करो, ताकि तब तक मैं पानी पीऊं, और जो पहले मुझे बताएगा फॉर्मूला, उसको भारत सरकार की ओर से मैं कुछ ना कुछ दिलाऊंगा। अगर 1 is 1st January 1900, then
What is 23rd January, sorry, 11th January 2023? अगर जूलियन नंबर 1 इस 1 जनवरी, तो मैं यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर डालूं जिससे मुझे आज का डेट आएगा? कैलकुलेट। सबको मिल गया ना आंसर? शाबाश, आप लोग मेरा नाम रोशन करोगे। चलो इतना बता दो, जो पहला आंसर बताएगा मेरे को, जस्ट टेल मी हाउ मेनी इयर्स हैव पास्ड। खाली इतना बता दो, चलो कितने साल हो गए? यस प्रकाश। check 44937 ओके 123 कितने साल हो गए? इयर्स, हाउ मेनी इयर्स? 123 123 इयर्स, एकदम करेक्ट आंसर। तो 123 इयर्स, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 सो इट्स 44,895। लेट्स चेक, अगर मैंने यहाँ पे 44,895 दिया तो मुझे क्या मिलता है? पहले मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डेट फॉर्मेट। सो 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, वो बाद में करेंगे, पहले मैं यहाँ पे इसको डेट फॉर्मेट में ले लेता हूँ। ओके, नाउ इट्स 44,895। तो आई कम क्लोज टू November 30, 2022। 44937 exact वेरी number नाइस। will be तो आप उसको जो भी है करके November 30, 2023 आ गया। अभी मैं और अगर कहां तक पहुंचूंगा मैं? दिसंबर। 30 जनवरी आएगा, 30 हाँ, let me add more 40 days। 44935 937 937। ओके, it's January 11, 2023। तो 44938। ठीक है, कल का डेट। At least you all understood why this is happening. So whenever this happens, you always change. अगर कभी भी आपका डेट जो है वो ऐसा दिखता है and you say why my dates are coming, I just wanted my numbers here, so just select your data and just press Control Shift and Tilt key so that the format goes. Okay, now say for example बहुत बार ऐसा होगा कि यहाँ पे सपोज कुछ डेट ऐसा लिखा हुआ है। Okay, and suppose I have ऐसा short date लिखा हुआ है and you now if you delete also and now if you type any number also, right, तो वो ऐसे ही दिखाएगा। I want to copy the format of this cell to this cell। कैसे कॉपी करेंगे? फॉर्मेट पेंटर। वेरी नाइस। फॉर्मेट पेंटर यूज करते हो आप लोग? एनीवन? फॉर्मेट पेंटर्स? वेरी नाइस। प्रकाश यूज करता है, जयराज भी यूज करता है, सहाना भी यूज नहीं करती है, मानसा नहीं करती है, दर्शना भी नहीं करती है। ओके, फॉर्मेट पेंटर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये रहा, ये देखो यहाँ पे पेन ब्रश दिख रहा है ना आपको? कैन सी दिस फॉर्मेट पेंटर बटन? इट इज यूज्ड टू कॉपी द फॉर्मेट। ठीक है, एज पर निरुक्तल। लेट्स चेक। इफ आई सिलेक्ट दिस वन, आई से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया and now the format of this cell is copied in my brush, and if I click on this one, you will see that this has been changed to this format। ठीक है, फिर से एक बार देख लो दर्शन। एक हिसाब से पता है क्या है ये मेकअप है, मेकअप टू कॉपी द मेकअप्स। से फॉर एग्जांपल मैं अभी बोलता हूं फिर से, आई जस्ट सिलेक्ट वन दिस सेल एंड इफ यू डबल क्लिक ऑन दिस फॉर्मेट पेंटर ट्वाइस, इट मींस अभी मैं okay, now you can see this, my brush is always in my hand. If I keep on clicking, I say change this, 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 समझ में आ रहा है आपको? Any value, even this, so I can change it, or I can just select and I can drag it. So all my cells, all my data will be formatted as per this value. सबको समझ में आ रहा? सिंपल है नहीं दर्शन? So for example, अगर आपने एक को, suppose this is in format in this way, it's center aligned, ऐसा करके aligned है ये,
and you say that I just wanted this to be in currency ऐसा type का, and this has to be bold, and also this is my style. And suppose now if you select this and you just double click on this format painter, now आपके brush में पता है क्या है, all the format of the cell is in your brush. You just keep on clicking on the cells and you will see that the cells will be formatted as per this. छोड़ेगा नहीं वो. You just press escape to come out of this brush. ठीक है? Yes, sir. Thank you. तो नो फिल कर देते हैं. बाकी तो आप लोग देख लो, सिलेक्शंस, यू नो ऑल दिस थिंग्स, टेक द बॉर्डर्स, हाँ ये सब देख लो खुद ही आप लोग फॉर्मेटिंग्स में. So I can just come here and I can say I just want all borders. So you will see that all borders are come, so that you have this much. I can just select and say I just want a thick border outside. You get a thick border outside here. I can always go to view menu and say remove the grid lines so that I can see my data like this without grid lines. Now it's a plain piece of paper, you know, so that I can make my own. I can build like this. फिर मैं क्या करता हूँ, I can select this. I can go to home. I say give me a border, thick border outside. You'll see that it's giving me something like this. Then I will select this row. I'll just go with this one. Then I will come again this one. I select this. Then I select this. So this is what I'm doing is I'm creating my own stuff. And so because I wanted to make a bill. And then I will just align, select किया, इसको merge कर दिया. Now this is my title here. So I will type here masters and so on, whatever I will type. So okay, what else format we have? Control-1. Important formats I will just cover today. It's a percentage, fractions. These are all ठीक है. Fractions are important. इतने होते नहीं है, but ठीक है. If you want your values to be, any questions? Okay, if you want your values to be in fractions, मतलब 0.5 should be shown in half, 0.75, 3/4, half होता है, 16th value हो गया. So if I just say that convert this to like this halves, and now if I type here 1.5, you will see that 1.5 has been changed to fractions, right? 0.5 करते हो तो 0. अबे 1.7, even 1.7 is half because वो automatically उसको half ही पकड़ता है ना? 1.8 it becomes 2. 1.8 जो है वो 2 हो गया. But if I change this again and I say do one thing, instead of half, can you show me this 1/4? Now this 2 becomes this, because this is not 2, this is 1.8. तो आप लोग देख लो आपको ये कैसा चाहिए. Now you want to show your data. Basically these are all, you know what, it is just to represent your data in the cell. Actual value कुछ और ही रहेगा, आपको क्या दिखाने का है वो याद रखना आप. Now see this scientific. Many times what will happen, you know, if you type a big data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छा ये तो आ गया because ये numbers में converted हो गया है, else ये नहीं आता. You'll always see that your data will be 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. It's already converted. Check. Okay, my data is taking it. In your Excel, you just check it out. Once you press 1 and 10 data, because even a latest वाला है, you will not get this data. It will get converted into like this 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. It will not show you this much of big data. वो आपको कैसे दिखाएगा पता है? वो आपको scientific format में दिखाएगा. ऐसे देख लेना आप. It will automatically get converted to this one. So आप लोग को कुछ नहीं करना है. You just have to convert it to general format or a number format, and you will see that you get the data over here. Okay. Then you have text type. You know what is text? It will convert your real values into text. मतलब अगर आपने इसको सिलेक्ट किया इतने को और बोला कि आज के बाद में ये लोग सब लोग टेक्स्ट बन जाओ, it means even if you type any number over here, this numbers will not be numbers. ये लोग हमेशा टेक्स्ट रहेंगे. I cannot perform any calculation इसके ऊपर नहीं कर सकता. So text क्या करता है? Text format. Text format will convert your cell into text. It means even the values enter, it will get converted to text. Is this important? आपको लगता है कि ये important है?
क्यों मैं करूंगा ऐसा यार? मैं अपने वैल्यूज को टेक्स्ट में क्यों बदलूंगा? यस प्रकाश। Sir, if you want to sum up and we don't want that value to be added, so we can do it. सॉरी क्या क्या क्या? जैसे अगर हमें सम अप करना है और हम नहीं चाहते कि वो सेल सम अप हो, तो हम उसे टेक्स्ट में कर सकते हैं। नहीं, अच्छा सम अप करना है आपको, तो सम अप करते हो तो वैसे भी टेक्स्ट तो सम अप होता ही नहीं है। नहीं, और अगर हम उस वैल्यू नहीं उस वैल्यू को अच्छा, उस वैल्यू को आप टोटल नहीं मारने देना चाहते। Sir, if we don't want others to edit it. दिस इज नाइस वन। देखो क्या होता है ना, सी आई टेल यू मेनी थिंग्स आई गेट टू नो। बहुत सारी चीज मैं सीखता हूँ, 25 साल हो गए मैं सिखा रहा हूँ, बट एवरी टाइम आई लर्न समथिंग। अभी प्रकाश ने बहुत अच्छा चीज बोला, अभी बहुत लोग नहीं बोलते। उन्होंने बोला कि सपोज इफ यू हैव सम नंबर्स ओवर हियर, ओके, एंड सपोज यू डोंट वांट दिस नंबर टू गेट एडेड इन माय टोटल, बिकॉज अगर मैंने अभी टोटल मारा तो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, माय टोटल इज 12,526। लेकिन वो बोलता है कि सर अगर मुझे ये वाला नहीं चाहिए तो आप इसको टेम्पररी, इन्होंने बोला कि इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है? तो दिखने में ऐसा ही दिख रहा है वो, बट नाउ इफ आई टेक द टोटल, अच्छा ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ? ये देखो क्या है यार, ओ माय गॉड। मैं पता है कैसे करता हूँ, अगर एक नंबर को कभी भी प्रकाश जी आपको करना होगा ना, वन नंबर इफ यू वांट टू स्किप इट, इसके आगे आपको सिर्फ एक लेबल प्रीफिक्स डालना होता है। वन सिंगल लेबल प्रीफिक्स विल कन्वर्ट योर वैल्यूज इनटू टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट हो गया है, ठीक है? तो इफ यू टेक दिस नाउ यू विल गेट समथिंग लाइक दिस ना। चलो ठीक है, वो तो ठीक है, आपने बोला अच्छा लगा मुझे, लेकिन बाय डिफॉल्ट सपोज आई टेल यू वन थिंग, यू हैव अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, और आई से इट्स ENP ID। बैंक अकाउंट नंबर मेरा 0005421 ऐसा कुछ तो नंबर है। हाँ, वो जीरो नहीं लेगा, नहीं फाइव लेगा, फोर वो 000 निकाल देगा, बिकॉज इन मैथ्स बिफोर जीरो हैज नो वैल्यूज। तो सबसे बड़ा रोल यहाँ पे वो अदा करता है। आपको समझ में आ रहा है सबको? मानसा लिसनिंग ना? यस सर। हाँ, वो है कि नहीं गई, क्या नाम उसका, अभी न्यूली ज्वाइन आई थी, चली गई? यस सर, मैं इधर ही हूँ। हाँ इधर ही हो ना, दिख नहीं रही हो आप। इधर ही हूँ सर। इधर हो, आपका नाम भी भूल गया मैं, क्या था? नुजहत रहमानी। हाँ नुजहत। उचित है कि नहीं? सो एम्प्लॉय ID 0245, सॉरी योर जीरो विल गो, दिस इज माय कोड नंबर्स। सो ऐसा टाइम पे क्या करने का, ऑलवेज यू, so whenever you feel like that this account number, my pin codes, we are not going to use, we are not going to add। आप कभी जिंदगी में क्या अकाउंट नंबर से ऐड करोगे क्या? तो ये कभी ऐड होने वाले नहीं है। तब आप इन सबको सिलेक्ट करके बोल सकते हो कि कन्वर्ट दिस इनटू टेक्स्ट फॉर्मेट, सो दैट it should be like this। how to remove this? select all, come here and say ignore। वो आपको एक इंडिकेशन देता है, एक वार्निंग देता है बस कि दिखने में ये नंबर है लेकिन है लो टेक्स्ट। Any questions till now? Sir, I have a small doubt, sir. Who, Darshan? Yes, sir. Yeah, Sir, Darshan. I think this is a vague one, sir. Sir, after we press control when we get the dialog box, like we choose decimals, sir. Can we edit the decimals after the decimal point, or will it stay only zeros? No. Why it will stay zero? It won't stay zero. If you selected and you have already said that I want a decimal over here, right? Two decimals, right? Yes, And if you see okay, now what will happen? If you type 10.25, it will stay 10.25. Okay, sir. And if you type 5, then also it will give you 5.0. Okay. But it will come into decimals because you have asked him that decimals mein dikhao. Okay, sir. Now, we saw how to grow a mango tree. आपको दिखाया decimal, different types of fruits. But what
if you want a multi-fruit tree, have you ever seen a tree? एक ऐसा झाड़ देखा है कभी आपने जहाँ पे एक ही झाड़ पर you have mangoes, bananas, papayas and chicus? करेक्ट? कितना मजा आता है. सोचो, आप 2 मिनट के लिए सोचो कि one tree is giving you different fruits on seasonal fruits. मतलब in summer you get mangoes, wow, and in December you get apples. So automatically ये पूरा लेटेस्ट वाईफाई वाला ट्री है जहां पर कस्टमाइज्ड है. ऑटोमेटिकली जो ट्री है वो सीजन के हिसाब से बदलता है. इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट यार. ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए मार्केट में. लेकिन नेचर है, अभी नेचर ही कर सकता है. बट एटलीस्ट वी कैन डू इट इन एक्सेल. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या ऐसे नहीं हो सकता है कि इन दिस कॉलम आई वांट 3 types of fruits. ठीक है? I want a comma tree also, I want a decimal tree also, and I want a currency symbol also. तीनों कैसे चाहिए आपको? मतलब चाहिए I want all the trees, all the तीनों tree. Now this becomes little challenging. ठीक है? सीखने के लिए तैयार हो? अभी अपने पास में भी आधा घंटा है. और तैयार हो आप लोग? सब लोग पानी पी लो थोड़ा सा. अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ जो आप लोगों को नहीं पता होगा. बहुत सारा चीज नहीं पता होगा अब तक जिसको जो पता है, बट नाउ यू विल नॉट नो. वेरी गुड जयराज. सब लोग पानी पी लो, मैं भी पी लेता हूं. The topic we are covering now is number formatting, which I have already started with number formatting. One is called cell formatting and one is called number formatting. Cell formatting का मतलब होता है कि you format a cell by changing the font color, changing the background color, giving the borders, playing with your cells and changing the looks of the cells is called cell formatting. How you want the numbers to be shown, मतलब सेल फॉर्मेटिंग हो गया. अब मैं चाहता हूं कि ये जो 5 जो नंबर लिखा है वो कैसा दिखना चाहिए. That is called number formatting. How you want your numbers to look like, whether it should look like a decimal, it should look like a rupees currency symbol, accounting symbol, कैसे दिखाना है आपको, it is all number formatting. Now we are going to learn is called custom number formatting. Custom number formatting ऐसे पकड़ के चलो. Means Excel बोलता है कि these all are predefined number formats which I have given you. एक्सेल बोलता है मैंने तुम लोगों के लिए ये रेडीमेड बटन्स बना के रखे, तुम खाली क्लिक करके ओके कर दो. Your selected cell will be changed to this number format. This is what Excel has given, but now my desire is something else which Excel is not having. मुझे जो चीज चाहिए वो नहीं है, तो ऊपर वाला बोलता है कि तेरे को दिमाग दिया है ना, तो तू मिक्स सीड कर, मिला के ग्रो कर सकते हो आप. मिक्स सीडिंग्स होते हैं जहाँ पे आपको एक ही झाड़ के अंदर 2 चीजें मिल सकती है. You have to apply your own logics and brains. So this is where Excel has given you one open ground. अब ध्यान से सुनना. There are some dedicated place to play. उसने आपको क्रिकेट खेलने की जगह दी है, मतलब वहां पे वही खेल सकते हो. But one ground he has given you and he has asked you that this is the ground called custom. Custom का मतलब होता है कि if you are not happy with any of this predefined number format, then please you have the liberty. तुम एक काम करो, एक्सेल बोलता है कि ये खाली जगह तेरे को दे रहा हूं मैं, तेरे को इधर कबड्डी खेलने का है, खो खो खेलने का है, मैंने तेरे को ग्राउंड दे दिया है. I have not put any poles, I have not made any pitch, I have not put any bat ball के लिए कुछ भी स्टंप्स नहीं डाला है, तेरे को ग्राउंड दिया है. You want to play, you want to ride, you want to drive, do whatever you want to do. Now this is the place. अब आपको क्या करना है करो. ठीक है? So let's play with this custom format and just see what we can do with these things. Now थोड़ा कंसंट्रेशन आपको लगेगा, है कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल है. लेकिन कभी कभी बोर हो जाता है ना इंसान, तो कहीं और दिमाग चला जाता है. देन वी स्किप समथिंग. सर यहाँ पे लिखने का क्या है? यहाँ पे आप जो भी लिखोगे वो एक्सेल को समझ में आना चाहिए, आपको नहीं. यू कैन नॉट राइट स्टोरीज ओवर हियर दैट प्लीज एक्सेल कैन यू डू समथिंग फॉर मी. दिस आर ऑल टिप्स. यू कैन नॉट राइट ऑल दिस थिंग्स. दिस यू हैव टू राइट इन अ प्रॉपर सिंटैक्स, बिकॉज अब यहाँ पे एक्सेल की भाषा में लिखना पड़ेगा आपको. इसको आप कोड बोलो या कुछ भी आपको जो बोलना है.
उसका एक लैंग्वेज होता है. इफ आई वांट टू टॉक टू यू इन इंग्लिश, आई हैव टू यूज द इंग्लिश वर्ड्स, आई हैव टू यूज ABCD, आई कैन नॉट यूज मराठी इन बिटवीन. तो वो भी एक लैंग्वेज है, मुझे भी यहाँ पे ख्याल रखना पड़ेगा. ओके, सो व्हाट दिस मीन्स सर, यहाँ पे लिखने का क्या बता दो. यहाँ पर there are 4 categories. You will write the lines and the lines will be divided into 4 categories. How? ऐसे समझ लो कि वो ये जगह है, ये चार चीजें, 3 and 4. The first part we call it positive numbers. The second one is the negative numbers. The third are 0. The fourth is text. Now, why I wrote this in a 4? Tell me one thing. Whenever you input anything, it can be a number. या तो आप कीबोर्ड से एक नंबर टाइप करोगे. Okay, the number also can be a positive number or a negative number. You can write 5, 10, 15, 20, 1,000, 10 lakh, crores, or you can write -5, -10, right? तो यहाँ पे होता है a positive number, or in numbers you can also write a negative number. Or if the number is not positive or not negative, then the number will be 0. Or if it is not at all number, then it will be text. That's what Excel assumes this. कि फिर वो बोलता है कि अगर ये तीनों में से कुछ भी नहीं है, then I will assume this as text. Is that clear? So in that custom box, you will write how your positive number should be look like. अरे समझ में? How you want to show your positive numbers. तो अगर मैंने वहां पर कस्टमाइजेशन में जाके लिखा ना ऐसा कि Apple, it means you want your positive numbers to look like Apple. देखने का तुमको देखो, अगर मैंने इतना सिलेक्ट कर लिया भैया, ये 5, I press Control 1. If I go to custom and I say in double quotes Apple, अब जैसे ओके करूंगा, and now you type your 10, you press enter, वो बोलता है Apple, 20 Apple, 30 Apple. You getting me? Because whatever you type in double quotes, it will show you like this. But for whom? To whom? आपको क्या लगता है यहाँ पे Apple पड़ा है? No, it is just showing you Apple. Huh? It is not your Apple. You can just see in the formula bar. It is 10, it is 20 and 30. And if I take the total, it will show me Apple. But it is not Apple. It is actually, you want to see this? What is this? It is 60. It's 60 because 10 plus 20 plus 30 is 60. Okay. तो यहाँ पे एप्पल क्यों आया सर? क्योंकि आपने यहाँ पे सबसे पहले उसको एप्पल बोला है. Okay. But sir, what about the negative numbers? So what you should do then? After you type the positive number के लिए whatever you feel like मेरे positive number ऐसे दिखने चाहिए, then for the next statement you have to break, इसको कहते हैं break statement by just pressing a semicolon. This semicolon is used in many languages. C के अंदर भी use होता है, C programming में, कि whenever you put a semicolon, it means कि my sentence is over and I want to start my new sentence, right? तो मैं next command, तो मैंने इसको बोला positive numbers apple दिखाओ, negative numbers mango दिखाओ. आ रहा है समझ में? So now if I select this much, Sir, it will not. Sorry? Sir, you selected it from, it will become B6 now, sir. So mango will not go to negative number. Means? Since you said I'm applying. I have not applied yet. I'm just showing you
that if the same thing, if I write it over there, I select this, I copy this, and now if I just say that apply this format over here, let me make this everything, I'll delete this, right? I'll delete everything. And now if I apply this over here in customization, and I say, I write the same thing, apple, semicolon, and mango. You know what this means? It means I am asking Excel that Excel in this selection, if any positive numbers you get, please convert it to apple, and if you get any negative number, show it as mango. Okay? Minus के साथ दिखाएगा. So if I type here 10, it will show me apple. If I type here -5, it is showing me mango. Whenever I type anything -10, it's mango. 10, it's apple. आ रहे समझ में? This is just to make you understand. We'll implement this कि actually इसको किधर use करने का. Sir, what would happen in case we use something which has not been defined, like zero or text? Yeah, that's what I'm going to write now. But no, sir, if we have only defined an apple and mango for the positive, yeah, that also will come into we picture. have zero Yeah, you have not yet defined zeros. You have not yet zeros के लिए तुमने कुछ बोला ही नहीं. Yes, sir. Right? What So yeah, see what is happening. Okay, sir. Zeros के लिए तुमने कुछ बोला ही नहीं. Zero के लिए बोलना पड़ेगा. You type here. What you want to type here? Say, I just want to type it 0. Just show me this, it's a 0. Okay? Okay. Now press Control C. I will select all of these. I press Control 1. Those who will be zeros, वो ऐसे दिखाए. We have 2 zeros. And if this mango changes to 0, it should be 0 now. And if I type something like this, but what if I type here, say, banana, then this will be banana only. Correct? Because it's a text. Yeah, because it's a text. But now if I type one more time over here, and I write here this is text, and now you select all of these, and now you see that your banana will get changed into text. Okay, I'll have to write this text. Okay, this is not selected. So even if I type this apple as now, if I type this as ABCD, it will say it's a text. So you just follow this rule. Once you type anything for the positive numbers, you have to put a semicolon. Okay? Okay. Now one more example. Let's say I have some names over here, and I have English, Hindi, Maths, Science, and Social Studies. Right? A, B, C, D, E. All types of marks over here. किसी को 0 मिला, some has got -2, and some is written fail. ऐसा कुछ लिखा हुआ है. Now let's say that I want to color this. Now see this. अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि why to use this. If I ask you, can you recolor the students who have got 0 marks, nil marks? ये जो 0 है ना 0, ये 0 मेरे को नहीं चाहिए. मुझे my positive number should be green color,
my negatives should be red color, my zeros should be shown as nil, NIL, और जो फेल है वहां पे आएगा वर्क हार्ड. You're getting me? What I said? I said my positive number should be green in color because I want to change the color. My negatives number should be red in color. The students who have scored 0 marks, it should show me nil. I don't want to show this 0 sign over here. And जहां पर भी fail लिखा हुआ है, वहां पर I want work hard. So, how will I type there? I'll type it over here and show you. So for the positive, I want green color. So now let's mention the color, because if you select all your numbers और तुम यहाँ पे सीधा ऐसे जाके कलर दे दोगे ना, तो it will be affected. देखो सबको हो जाएगा ऐसे. Okay, so better you should do using the back end programming. अब यहाँ पे ऐसा सोचो कि तुम लोग ये कोड लिख रहे हो. After that code, if anyone tries to change the color also ना, उसका कलर कभी चेंज ही नहीं हो पाएगा. Even if you try from here, nothing will happen because it is from inside. कोई नहीं चेंज कर सकता है उसको. कैसे करते हैं? अंदर जाके क्या लिखेंगे? For the positive, you want the green color. Color should always be in box bracket. Now this is a rule. The very first rule is that you should always write the color codes in bracket. मतलब मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा. मैंने उसको सीधा बोल दिया ग्रीन. अभी वो समझ गया ग्रीन किसको करने का है, वो पॉजिटिव नंबर को ही करेगा ग्रीन. ठीक है? Then you put a semicolon means you have already told him about the positive numbers. उसके बाद जैसे ही मैं semicolon करता हूँ, Excel will understand, okay fine. Now he is asking me something to play with the negative numbers. तो negative numbers के लिए मैं इसको again box bracket open करता हूँ and I say for the negative it should be red. Okay. And now if you leave this only, then he will only read your green and red for negative and positive. Zeros को वो कुछ नहीं करेगा, वो ऐसे zero दिखाएगा तुमको, because you haven't mentioned anything for zero. ठीक है? Okay. And for the zeros, what you want him to do? So I just want him to show nil. So now don't have to put box bracket because ये nil है, work hard है. These are all user text. User text should always be in double quotes. याद रखना. So I will type here NIL. This is for my zero value. The last semicolon will be for the text. जहां पर भी fail लिखा हुआ है, wherever there is a text, what you want him to show on the in the cell. I just want to show him he work hard. Yes, at the center. Now if I copy this one और custom format में जाके जैसे इसको paste करूंगा, तो क्या होगा? The positive numbers को वो numbers ही दिखाएगा, but it will show in green color, and this -2 will come in red color, and बाकी जो zeros हैं, ये 1 और एक 0 था किधर पे, ये दोनों nil हो जाएगा, and this will become work hard. Let's check. I will select all, but before that I need to copy this, right? तो इनको सबको select करके I will copy this, नहीं तो मुझे ऑफिस लिखना पड़ेगा. And now I select all of these numbers. I press Control 1, go to custom, and type here Control V. Let's see what happens. See. Can you see your automatically why he did only 2 2? क्यों किया इसने ये? क्योंकि यहाँ पे -2 लिखा था. Green color. Lot more to come. Don't worry. माइनस साइन भी आ जाएगा. So work hard को I wanted to give some blue color, और nil को I want to give a blue color, और just say कि sir I don't want to show nil. मुझे जो 0 है ना वो दिखाना ही नहीं. I want to hide those values. If you want to hide those values, then do one thing. पता है क्या करेगा? This one is for the positive. This one is for the negative. This one, remove this one. But don't remove this one. It means आपने उसको क्या बोला ना? Positive को green color करने का, negative को खाली red color करने का, and the one more semicolon means you are asking him for the
zeros, and but you are not writing anything, and directly you are giving one more semicolon. It means you are skipping the zero part. It means he says he understands कि zero को कुछ नहीं करने का. He will also skip zero for you. And if the same thing, if I copy this, you will see that zeros will not be visible anymore. Zeros are gone. आ रहा है समझ में? Okay. Now if I type something like this, if I type this like this, what will happen? सब लोग बोर हो गए क्या? सच्ची बोलो यार, ऐसा मत करो. All the positive numbers will be in black only, sir. The Positive number will not be visible now. हाँ. Positive number hide हो जाएगा. So this is the best trick to hide your content. अगर आपको कभी भी कंटेंट को हाइड करना है ना, तो ये बेस्ट मेथड है. बहुत लोग क्या करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं. डोंट डू दैट. ये दिस इज द बेस्ट मेथड. So ये करूंगा तो all my positive numbers will be hidden. So if I select this and I press Control 1, and instead of green, I will remove this green part. Okay, but I will not remove the semicolon. Na? So कभी भी if you want to hide everything, तो खाली इतना कर देने का. That's all. Your 3 semicolons will hide your positive, negative numbers and even your text. Because पहले semicolon के पहले हो गया तुम्हारा positive, then comes negative, then comes zero, and last semicolon के बाद it's text. So everything. अगर मैंने यहाँ पे 3 zero डाल दिया ना, 3 semicolon, it's gone. Right? But ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ नहीं है. You can just check the numbers are still there. Fine. And if you select all your numbers and press Control Shift and Tilt key, the format will go. It will come back to your general format. Any questions? Very interesting. अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ये बहुत लंबा है. इसके अंदर मैं आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ, लेकिन ये परसों दिखाऊंगा. Day after tomorrow. Sir, can we do this with only positive, negative, zero, or can we give a range? For example, 10 to 30 is one particular, say, positive for me, and 40 to 50 is something else. You cannot give range, but you can select, because it's a number format. If you want to give from 10 to 30, then you need to select this, right? You'll have to apply it to the range. Then you have to write this. You have to select it, and then you say that you give this. But you can do one thing. That you can give your own conditions. You can have your own condition that will do day after tomorrow. But I cannot say that after selecting this, कि मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि after selecting everything from 1 to 10, you make this. No, you cannot do that. उसके लिए फिर VBA करना पड़ेगा. I think आज के लिए काफी है. All flipped. खाना खाया तुम लोगों ने? किसी ने भी नहीं खाया ना? You all will have food now. Okay. Ganesh, you left or what? Ganesh गया? हाँ, अच्छा गणेश है. है सर. हाँ, बाकी so many याद है. सृष्टि को देखा नहीं अभी तक. सुरेंद्र, रक्षित पता नहीं है. करण को आई थिंक देखा था लास्ट टाइम. Even आनंद. Anyways, hi Pujit, you came back. क्या डिनर को गया था क्या? नहीं सर, इधर ही था. So day after tomorrow, we'll be doing some good stuff on custom formatting. मजा आएगा. Book और पेन लेके आ जाओ. We'll solve a lot of questions and you'll understand this good part of Excel. चले?